अस्सलाम वालेकुम जी। वर्कशीट पास पेपर वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम था, आप बताइए। क्वेश्चन 9। जी, क्वेश्चन 9। It's a mixture of simultaneous equation and also the maybe coordinate geometry. It says the line x over a plus y over b is equal to 1. नजर नहीं आती ये लाइन है, लग नहीं रहा है लाइन है, बट उसने खुद मेंशन किया लाइन है क्योंकि a and b are the constants. So variable x and y उनकी पावर 1 है, so it's a linear equation. It's a line. X over a plus y over b is equal to 1, where a and b are positive constants. Intersect the x and y axis at the points a and b. I mean, this line cuts the x axis at a and y axis at b. The midpoint of AB lies on the line 2x plus y is equal to 10. And the distance AB is 10. Find the values of A and B. So, where is the point A? Point A is on x-axis के ऊपर है ना point A. So can you tell me the coordinates of A? Because A is on x-axis, so its y-coordinate will be 0. I don't know what is x-coordinate. हम x coordinate को x कर देते हैं y, but we know y coordinate is 0. So B is on y axis, so its x coordinate will be 0 and y coordinate is y. And the question says कि this line passes through A and B. So इसका मतलब है कि हम इसमें y0 put कर सकते हैं. So if you put y0, you will get x. So put y0. So if you put y0, you will get x over a is plus 0 over b is 0 is equal to 1. So it means x is equal to a. So x is equal to a. So it means the coordinates of a are a0. Now I want to find the coordinates of b. Because b is on y-axis, so x coordinate is 0. So x coordinate 0 means x0 put कर दीजिए. And if you put x0, this is 0 over a plus y over b. So y over b. So 0 over 0 plus y over b is equal to 1. So it means the value of y is b. So the coordinates of b is 0, b. So Rida, we have decided the coordinates of a and b are a0 and 0b. Further, it says the midpoint of AB, the midpoint of AB lies on this line. Do you know the midpoint of AB? Can we find the coordinates of midpoint? Yes, by using the formula. So इसका midpoint बताइए क्या होगा? x1 plus x2 over 2. x1 mean a plus x2 means 0. So a plus 0 over 2. So it is a by 2. Y coordinate is 0 plus b over 2 mean b over 2. So these are the coordinates of midpoint. Now he is saying the midpoint of AB lies on this line. So इसका मतलब ये है कि ये point उस line की equation को satisfy करेगा. We can use this point and that line. So आप x में क्या put कर दें? A by 2. So 2x plus y is equal to 10 mean x is a by 2 plus y is b by 2 is equal to 10.
So we have 2a plus b, इन दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर is common. So the equation is 2a plus b is equal to 20. We have to find a and b. ऐसे ही है ना? The question is find the values of a and b. So we got one equation in terms of a and b. So इसका मतलब we should have another equation in terms of a and b so that we can solve them simultaneously to get a and b. So 2a plus b is equal to 20 आ गया. Where to get other equation from? अभी हमने एक information ऐसी जो कि use ही नहीं की. What is that information? Distance. It says कि distance AB is 10. So distance formula is under root x2 minus x1. So distance between A and B. So A minus 0 whole square. Can I write simply A square? B minus 0 whole square is B square. So distance, this is a distance formula, this distance between A and B. And this is equal to 10. Take square on both sides. So you'll get A square plus B square is equal to 100. So we got another equation in terms of A and B. We will solve these two equations simultaneously to get A and B. इधर हो जाएगा आगे आगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना अगर हमें आता है तो कोई इशू नहीं है. एनी अदर क्वेश्चन? जी कोई और प्रॉब्लम वर्कशीट में? इब्राहिम, आमिना, नो मोर प्रॉब्लम. ओके सो हम चलते हैं वापस. वी वर डूइंग दैट क्वाड्रेटिक्स. क्वाड्रेटिक्स ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. लास्ट कुछ चीजें हमने और डिस्कस करनी है और वो क्या है? दैट इज अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर. Okay, quadratics में what was the last lecture? The last lecture was about completing the square. Yesterday we did this, completing the square. मीन हमने काफी डिटेल में देखा था कि स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट मेथड से किया और फिर मैंने एक शॉर्टकट भी बता दिया. कंप्लीट मेथड भी है और शॉर्ट मेथड क्या था? इफ यू हैव x क्यूब प्लस 10x देन इट्स स्क्वायर जब कंप्लीट करेंगे we will write this x as it is plus as it is half of the coefficient of x. Half of 10 is 5. So it will be x plus 5 whole square and outside of 5 square subtract kar denge. And with the help of this we can find the coordinates of minimum and maximum point. So if it is x square minus 4x, it will be x minus 2 whole square minus 2 square. If it is x square minus 9x, x minus 4.5 square minus 4.5 square. अगर ये प्लस 3 ऐड भी हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है क्योंकि इस 3 का स्क्वायर कंप्लीट करने में कोई रोल नहीं है. ये एज इट इज 3 एंड पे आता जाएगा. सिर्फ आपने जो स्क्वायर कंप्लीट करना होगा वो उसी तरह आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x को देख के करते हैं. और जो लास्ट हमने किए थे क्वेश्चन, those were the questions which were having the coefficient of x square other than positive 1. Before that, all the coefficients were positive 1. I mean x square का coefficient हमेशा positive 1 था, positive 1, positive 1. So, लेकिन अगर coefficient of x square positive 1 ना हो, then in that case, what we have to do, we have to make it 1. Mean कैसे? यहाँ पे ये 2 आपने common लिया. So when you have taken 2 common out of 2x square, it is x square minus 4x plus 1.5 और फिर आपने स्क्वायर उसी तरीके से कंप्लीट कर दिया. So one question इसी तरह का और फिर हम आगे चलेंगे. If you have 5x square minus 20x plus 3. G, what should be the first step?
we should take 5 common. If we take 5 common, जो कॉमन लेते हैं बेसिकली वो नंबर डिवाइड हो रहा होता है. सो 5x² डिवाइड बाय 5 इज x², -20x डिवाइड बाय 5 इज -4x. अगर आपने 3 में से 5 कॉमन लिया, देन मनाल, if we take 5 common from 3, then what are we left with? Sorry, 3/5. So जो कॉमन लेते हैं बेसिकली वो नंबर डिवाइड होता है. So आप इसको 3/5 सिंपली लिखें, और अगर डेसिमल में करना चाहते हैं 0.6, बट इट्स बेटर टू कीप 3/5. सो ऐसा नहीं है, नॉर्मली हम यही देखते हैं कि वो कॉमन होगा तो उसमें लेते हैं, लेकिन अगर ना भी हो तो हम उसको लिख सकते हैं इट्स 3/5. ये हमने लास्ट क्लास में यही किया है. और जब आपके पास अब हो गया, अब आप स्क्वायर कंप्लीट कीजिए. हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर, बताइए इजलाल. x-2 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर, ऐसे ही है ना भाई. मीन ये कैसे करते हैं, x, ये कोफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ कर देते हैं, x-2 होल स्क्वायर, एंड इनसाइड टू जो नंबर होगा द सेम नंबर का स्क्वायर विल बी सब्ट्रैक्टेड आउटसाइड, +3/5. ओके, नाउ आप पहले वो ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए. सो x-2 होल स्क्वायर, व्हाट इज -2 स्क्वायर? इट्स +4 -4. याद रखिए ये -2 स्क्वायर, दिस इज +4. एंड व्हाट अबाउट दिस -4? ये स्क्वायर नेगेटिव के ऊपर नहीं है, सो ये -4 ही रहेगा. नाउ देयर आर टू ऑप्शंस. अगर आप पहले इनको इंटरनली सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लें, और बाद में ये 5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या पहले 5 अगर मल्टीप्लाई करना है वो भी आप कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. सो अगर हम 5 चले मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, सो व्हाट विल यू गेट? वी विल गेट 5 टाइम्स x-2 होल स्क्वायर. 5 times 4 is 20. 5 times 3/5 is 3. So we have 5 into x-2 whole square minus 70. Ilyas, what are the coordinates of vertex? 2 and -17. And is that minimum or maximum? Minimum. So ये भी हम कर चुके हैं. आपने क्या नाम बताया? नाफे. मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने आते हैं, और ये चेक भी करना आता है कि मिनिमम कैसे डिसाइड हुआ. If the coefficient of x square is positive, it means the curve जो U shape है वो upward open होगा, happy face बनेगा. If the coefficient of x square is positive, it will have a U shape, happy face, U upward open होगा. अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, उसका ग्राफ उल्टा U बनता है, ऐसा, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो. सो अब आप देखिए कि इस कर्व का अगर पॉजिटिव x स्क्वायर कोफिशिएंट हो तो दिस पॉइंट इज, ये वर्टेक्स इज मिनिमम, एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव, सो ये सैड फेस, और इसका एक जो पॉइंट होगा वर्टेक्स होगा टर्निंग पॉइंट, दैट विल बी मैक्सिमम. सो इन्होंने वो देखा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो इन्होंने इसलिए वो बताया कि 2 - 17 इज मिनिमम, राइट. सो जब कभी भी x का कोफिशिएंट +1 नहीं होगा, हम उसको कॉमन लेके +1 बनाएंगे, बाकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एज इट इज चलेगा. ओके, नेक्स्ट इज 3 -
8x minus x square. Complete the square. जी इसमें अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करें so what should be the first step? बेहतर हम माइनस कॉमन और रीअरेंज कर लें मीन ऑर्डर क्या होता है फर्स्ट एक्स स्क्वायर देन एक्स एंड देन कांस्टेंट सो रीअरेंज भी कर लें so minus x square minus 8x plus 3 now we know that the coefficient of x square should be positive 1 so take minus या minus 1 common so if you take minus common inside will become positive x square positive 8x negative 3 और अब आप इनसाइड स्क्वायर कंप्लीट कीजिए सो x प्लस 4 होल स्क्वायर आउटसाइड 4 स्क्वायर minus 3 so x plus 4 square minus 16 minus 3 so minus 16 minus 3 is minus 19 so if you multiply this will be negative x minus 4 whole square positive 19 ऐसे ही है what are the coordinates of the vertex it is positive 4 and positive 19 is this minimum or maximum because the coefficient of x square is negative so this curve will have a maximum point so ऐसी curve बनेगी और इसका एक maximum point होगा okay next 4x square minus 24x plus 1 इसके टू टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं एक आपको क्वेश्चन कहेगा मीन दोनों में स्क्वायर कंप्लीट करना होगा फर्स्ट इज चले पहले फर्स्ट आप इसको इस फॉर्म में लिखिए आप इसको फॉर्म बनाइए इसकी a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी इस फॉर्म में इसको लिखिए तो पहले ये फॉर्म बनाइए डन फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने 4 कॉमन लिया सो 4 वैसे ऑप्शन होती है कि आप चाहे 4 सब टर्म में से कॉमन लें और अगर आप लास्ट टर्म में से कॉमन नहीं लेना चाहते सिर्फ फर्स्ट टू में से भी कॉमन लें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली स्क्वायर कंप्लीट करते हुए रोल इन्हीं फर्स्ट टू टर्म्स का होता है सो लेकिन अगर कंफ्यूजन समटाइम्स आ जाती है कैलकुलेशन में कुछ लोग मिस्टेक करते हैं तो अगर सब में से 4 कॉमन लें तो इट इज x square minus 6x plus 1/4
नाउ स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। So x minus half of 6 is x minus 3 square minus 3 square plus 1 by 4 as it is. So we got 4 into x minus 3 whole square minus 9 plus 1 by 4. Now multiply 4, we will get 4 into x minus 3 whole square minus 36 plus 1, which is right. So square complete हो गया। वो जो फॉर्म थी आपके पास आ गई। What is A, B and C? A is 4, B is 3 and C is minus 35. What are the coordinates of vertex? 3 and minus 35. So इसी का एक सेकंड पार्ट अगर या इसी का यही क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि राइट दिस इन द फॉर्म ax minus b whole square. मीन ये a अगर b उनसे कंफ्यूज मत कीजिए जो पार्ट 1 में है। चलिए कोई डिफरेंट वेरिएबल में यूज कर लेता हूँ। राइट दिस इन द फॉर्म px minus q whole square plus r. सो क्या ये फॉर्म आ चुकी है या इसको लाना है? क्या डिफरेंस है? जो फर्स्ट फॉर्म थी उसमें एक कोफिशिएंट वाज आउटसाइड दैट होल स्क्वायर, इन सेकंड फॉर्म दैट कोफिशिएंट इज इनसाइड द होल स्क्वायर। सो व्हाट शुड वी डू? दोबारा करें आप इसको। एक ऑप्शन मीन आपके पास इसको स्टार्ट से अगर लेके चले और 4x² को आप 2x² लिख लें वो भी होती है। लेकिन सपोज आप नया मेथड कोई नहीं सीखना चाहते, ये मेथड आपको आता है, अगर इसी में अगर आप एक स्टेप और कर लें तो वो फॉर्म बन सकती है। 4 को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर। यस। क्या 4 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, उसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा और स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वो नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करें कि विदाउट ओपनिंग द स्क्वायर 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए। वो जिस तरह मनाल ने बताया कि आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें। उसकी रीजन मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आगे बता दूंगा कि डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम कैसे करेंगे। दिस इज रिटन 4x minus 3 whole square minus 35। पहले समझें। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। अब अगर 2 पे भी स्क्वायर है, x माइनस 3 पे भी स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही है। सो दैट विल बिकम 2x माइनस 6 होल स्क्वायर। सो अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली अंदर क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 2। सो अगर आप इधर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं विदाउट ओपनिंग स्क्वायर, सो आपको इस जो नंबर बाहर होगा उसके स्क्वायर रूट से अंदर मल्टीप्लाई करना है। उसकी रीजन आपको समझ आ रही है कि 4 को पहले हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, देन दैट 2 विल गेट मल्टीप्लिकेशन विद दैट। So directly if you want to write this is, if this is 4, so inside you will multiply 2. So 2x minus 6 whole square minus 35. इसको देख के बताइए what are the coordinates of the vertex? Yes, coordinates of vertex, Rida. So coordinates of vertex, it's not 6 minus 35. The coordinates of vertex are 3 minus 35. ये बात पता है ना हमें? एक्चुअली यहां से भी 3 माइनस 35 ही आए थे, और इधर से 3 माइनस 35 कैसे आता है कि जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है आपको इसको जीरो इक्वेट करना होता है। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो करते हैं। जब वो जीरो करते हैं तो आपके पास 2x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, मीन x इज इक्वल टू 6/2 विच इज 3। सो 3 माइनस 35 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। और अगर ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स हैं तो फिर हम इसको फर्दर बता भी सकते हैं कि ये मिनिमम के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है।
सो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी हो गया। सो इस क्वाड्रेटिक्स टॉपिक में हमने 5 सब टॉपिक्स कर लिए हैं। फर्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट वन? मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि हमने इस टॉपिक चैप्टर क्वाड्रेटिक्स चैप्टर में क्या क्या किया। फर्स्ट, वी लर्न कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक inequalities. Then second topic was simultaneous equation, जिसमें एक लीनियर और दूसरी नॉन लीनियर हो, दोनों नॉन लीनियर भी हो सकती हैं। Then we did third subtopic was discriminant. After discriminant, we did, what was that? Equations reducible to क्वाड्रेटिक्स। मीन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि क्वाड्रेटिक्स नहीं होती, लेकिन उनको उनमें कोई सब्स्टिट्यूशन करके उनको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं और फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बाय completing the square. So we did these 5 subtopics in this quadratics topic. So अब हम इसके कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। Okay, find the set of values of a for which the curve y is equal to minus 2 by x and the straight line y is equal to ax plus 3a meet at two distinct points. अब्दुल्ला, ये क्वाड्रेटिक्स में से कौन सा सब टॉपिक बन रहा है? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का कौन सा केस है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। सो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो वाला केस है। अब आप ये बताइए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, ए बी सी कहां से आएगा? फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से? दोनों को हमने इक्वेट करना है, साइमल्टेनियसली गेट अ थर्ड इक्वेशन। उस थर्ड इक्वेशन से विल पिक द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड वी विल पुट इन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए आ जाएंगे। सो लेट्स सी। सो एक इक्वेशन है y is equal to minus 2 by x and the other equation is y is equal to ax plus 3a. So आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कीजिए। So you will get ax plus 3a is equal to minus 2 by x. Cross multiplication. So it is ax square plus 3ax is equal to minus 2. Mean ax square plus 3ax plus 2 is equal to 0. So उनको simultaneously solve करके we got a standard quadratic equation. From this equation, Ibrahim Jan,
What is A, B, and C? Sir, A will be A, B is 3A, and C is 2. The coefficient of x square is A, the coefficient of x is B, the constant term is C. So A to A है, B is 3A and C is 2. And we know the case of discriminant is B square minus 4AC less than 0. Case डिस्क्रिमिनेंट का कौन सा उसको प्लीज क्लियरली मेंशन किया करें, ये आइडेंटिफाई करने का ये 1 मार्क एलोकेटेड हो, सॉरी ग्रेटर देन 0। ये केस डिस्क्रिमिनेंट का इसके मैं इसको क्लियरली मेंशन किया करें। हाँ ये कि वैल्यूज प्लग करके भी शो किया जा सकता है, लेकिन इसका 1 मार्क एलोकेटेड होता है। नाउ पुट ए बी सी, सो ए इज बी इज 3A, A is A, C is 2, so greater than 0. So we got 9A square minus 8A greater than 0. अब्दुल्ला कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया अभी आगे, यहां से आगे? क्या ये सॉरी क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो। क्या ये लीनियर इनइक्वालिटी है? यस। नो, लीनियर की वेरिएबल की पावर 1 होती है ना, तो ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, पावर ए स्क्वायर आ रहा है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है? ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने वो लेवल में सॉल्व की थी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यहाँ पे क्वाड्रेटिक्स का फर्स्ट सब टॉपिक हमने किया था। सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी डिसाइड कर लेंगे ना आप। कैसे करेंगे? पहले तो आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। इसके टू सॉल्यूशंस क्या हैं ए के? इनइक्वालिटी अभी नहीं, वैसे नंबर्स बताइए। ए इज 0 एंड 8/9। मीन अगर किसी को इक्वेशन सॉल्व, अगर आप इसको इक्वल करके पहले सॉल्व करना चाहते हैं, अगर इक्वल करके पहले ए की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहां से ए कैसे फाइंड करेंगे? वी विल टेक ए कॉमन, 9A minus 8, so either A is equal to 0 or 9A minus 8 is equal to 0, so the value of A is 8/9. But remember, this is not the final answer. ये इक्वेशन नहीं थी। A is equal to 0, A is equal to 8/9 नहीं आना चाहिए। It was inequality. So inequality के साइन, अगर तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप मेंटली इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड कर सकते हैं तो गो अहेड। और अगर आपने नहीं होता तो स्केचिंग वाला मैंने मेथड बताया हुआ है, आप स्केचिंग के थ्रू करें। स्केचिंग के थ्रू कैसे करेंगे जनाब? इसका मैं इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करना चाह रहा हूँ। ए इज 0 एंड 8/9, सो 0 8/9 मीन एक एक्स इंटरसेप्ट है 0 एंड द अदर इज 8/9। ये क्वाड्रेटिक में ओरिजिनल कर्व नहीं ड्रॉ करा, आई एम गोइंग टू स्केच दिस वन। ओके, the coefficient of a square is positive, so the graph must be opening upward like this. Which part of the curve should be shaded? Below, above? 9A square minus 8A is greater than 0. So the portion of the curve which is above the x-axis should be shaded. So now look at the shaded region and decide the inequality. So your A is smaller than 0, means shaded region is on the left of 0. So A is less than 0, or the other shaded region is on the right of 8/9. So A is greater than 8/9. Remember, this is not the only method जिससे आप inequality का साइन डिसाइड करते हैं। अगर आपको कोई और मेथड आपको पहले आता है आप उससे कर सकते हैं। अगर आपको शेडिंग से समझ आ रहा है आप शेडिंग से कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी, अगर आप इसके कॉन्टिन्यूसली 10-12 क्वेश्चन करें उसके बाद आप मेंटली भी कर सकते हैं। जी क्लियर है? सो इसी एक टॉपिक में क्वाड्रेटिक्स का
टू सब टॉपिक्स टेस्ट हो रहे हैं। खैर साइमल्टेनियस भी थोड़ा सा टेस्ट हो रहा है स्टार्ट में। एक डिस्क्रिमिनेंट एंड द सेकंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। जी क्लियर है ये, कोई मसला? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, डिस्कस कर लेते हैं जो भी है। The equation of a curve y is equal to x square minus 6x plus k, where k is a constant. Find the set of values of k for which the whole of the curve lies above the x-axis. रेदा टॉपिक बताइए कौन सा है? Discriminant. And which case of discriminant is this? The whole curve is lying above the x-axis. कुछ ऐसी है, ऐसे मतलब बन रहा है ना। इसका मतलब this curve has no point of intersection with the x-axis. So no point of intersection means no solution, no real solution. So this is third case, b square minus 4ac is less than 0. वो जो greater than 0 होता है उसमें टू टाइम्स वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कि इट लाइज अबव द एक्स एक्सिस। सो ये आप आगे कर लेंगे। अब आप द सेकंड पार्ट इज find the value of k for which the line y plus 2x is equal to 7 is a tangent to the curve. तो वो कर्व और इस लाइन को साइमल्टेनियसली इक्वेट करेंगे, उसमें से ए बी सी आएगा, मीन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद। टेंजेंट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 को इस फॉर्म में लिखना है, a इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। ये आज हमने किया। तो इसमें फर्स्ट स्टेप इज वी शुड टेक 3 कॉमन, उसके बाद स्क्वायर कंप्लीट करें। और यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा आप वो लिख देंगे। अगर कहीं पे लिख दे वेयर a b एंड c आर द कांस्टेंट्स टू बी फाउंड, फिर इन दैट केस स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आपको अलग अलग बताना है a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस। इसमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूं अगर किसी में मेंशन हो कि ए बी एंड सी आर द कांस्टेंट्स टू बी फाउंड, हम अक्सर वो फॉर्म लिख के छोड़ देते हैं, वो कांस्टेंट्स मेंशन नहीं करते, सो आंसर मार्क लूज करेंगे। सो आई होप क्लियर है। मैंने क्वाड्रेटिक्स टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं ग्रुप में वर्कशीट सेंड करूंगा, वो प्लीज आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज नोट डाउन माय नंबर 0345515462। तो मुझे अपना नेम व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं और वर्कशीट पर और बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।